Hello everyone. As discussed earlier, today again we are going to do some few questions, random questions of chapter 3, pair of linear equation in two variables. Today we are picking up questions from exercise 3.6. From board exam point of view, I think this is the most important exercise because every time question is repeated from this type of version of questions given in the exercise. So I will try to take as many as questions as possible. So first question we are taking: solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equations. That means first of all we have to convert the given pair of equations to linear equations. So 1 upon 2x plus 1 upon 3y equals to 2. 1 upon 3x plus 1 upon 2y is equal to 13 by 6. So this is the first question. So सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए these are equations, not लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें हमारी वेरिएबल की जो पावर होती है हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो रहेगी वो 1 रहेगी. देन वी कॉल इट अ लीनियर इक्वेशन. 1/x का मीनिंग होता है x रेज टू द पावर -1 एंड सिंपल x का मीनिंग है x की पावर 1. So this is not a linear equation. This is not a linear equation. This is a linear equation. तो सबसे पहले हम convert करेंगे given pair of equation को to a pair of linear equation. So let 1/x is equal to a and 1/y is equal to b. Then what we get? 1/2a plus 1/3b is equal to 2. 1/3a plus 1/2b is equal to 13 by 6. Now this is a set of new equation in variables a and b, and a and b are having power 1. So these are linear equations. So here we are having equation number 1, equation number 2. Now you can use any method of solving the system of linear equation. We will be using here method of elimination. By elimination method, multiply this first equation by coefficient of the variable a in equation 2. This is 1/3. So we will multiply this by 1/3 and we will multiply equation 2 by coefficient of a in equation a, that is 1/2. So what we get? We get 1/6a plus 1/9b equals to 2/3. This is the first equation. And what we get in the second equation? 1/6a again plus 1/4b equals to 13 by 12. Now both have the same sign, so we have to subtract minus minus minus. So they cancel out each other. With b, what we are getting? We are getting 1/9 minus 1/4 equals to 2/3 minus 13 by 12. Now take the LCM on both sides. What we get? This is 36. Here we will get 4 minus 9. Here 12. 4 2s are 8 minus 13. What we are getting? We are getting b minus 5 by 36 equals to 8 minus 13. That means minus 5 by 12. So here it is in multiplication with b. So when we take this factor to another side, it will become minus 5 by 12 into 36 by minus 5. So minus 5 cancels out each other, and this is 12 3s are 36.
So what is the value of B? 3. Value of B is 3. Similarly, we have to find the value of A first. Put the value of B in equation first. Put value of B in equation first. What is first equation? This is our equation number 1. 1 by 2a plus 1 by 3b. So at place of b we will put 3 equals to 2. So 3 cancel out each other. So this will become a by 2 plus 1 equals to 2. A by 2 equals to 2 minus 1. This is 1. A by 2 equals to 1. It implies A equals to 2. So now we are having A equals to 2 and B equals to 3. What is A actually? We have chosen A as 1 by x and B as 1 by y. So here 1 by x is equal to 2, 1 by y is equal to 3. So x, on reversing the values, what we will get? X is equal to 1 by 2, y is equal to 1 by 3. This is your required answer. Now let's move to the second question. Second question of the same part. This is 2 by root x plus 3 by root y equals to 2. 4 by root x minus 9 by root y equals to -1. Now अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, रूट देख के यहीं पे घबरा जाएंगे, पता नहीं क्या आ गया, छोड़ दो. ऐसा कुछ नहीं करना है. अगेन फॉलोइंग द सेम स्टेप्स, आपको सारे स्टेप सेम फॉलो करने हैं. लेट 1 बाय रूट एक्स इज इक्वल टू ए, 1 बाय रूट वाई इज इक्वल टू बी. सो दिस विल बी 2a plus 3b equals to 2. 4a minus 9b is equal to -1. So again we are having a pair of linear equation. This is your equation 1. This is your equation 2. By method of elimination. अब फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बाय कोफिशिएंट ऑफ ए in the second equation, that is multiply by 4. We have to multiply equation 2 by coefficient of a in equation this. So we will multiply equation 2 by 2. So what we get? We get 4 2s are 8a plus 12b equals to 8. 8a minus 18b, 9 2s are 18 equals to -2. Minus plus plus, they cancel out each other. This is 30b equals to 10. So b is equal to 10 by 30. This is nothing but 1 by 3. So b is nothing but 1 by 3. Similarly you can find a. You can find a yourself by putting the value in equation a or b. Then after that a आपका जो भी आए, b आपका जो भी आया. b आया हमारे पास 1 by 3. b is 1 by 3. What was b? b was 1 by root y is equal to 1 by 3. That means y root y is equal to 3. रूट जब दूसरी तरफ पे जाएगा तो then it will become the square. So this is y is equal to 3 square and this is 9. Y is equal to 9. Similarly you can find for x. This is question number 5th. 7x minus 2y upon xy is equal to 5. And the second one is 8x
प्लस 7y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 15। सो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। 7x स्प्लिट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को आप अलग अलग लिख लीजिए, xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। नाउ अब जब आप इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, x कैंसल आउट ईच अदर, हेयर again y cancel out each other, similarly in the second one x cancels each other, y cancels each other, so what we get 7 by y minus 2 by x is equal to 5, 8 by y plus 7 by x is equal to 15। इसके बाद आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, x को आगे लिखना चाहे लिख सकते हैं, फॉर सिंप्लीफिकेशन माइनस 2 बाई एक्स प्लस 7 बाई वाई इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज 7 बाई एक्स प्लस 8 बाई वाई इज इक्वल टू 15। अब आपकी वही फर्स्ट पार्ट 1 वाली फॉर्म आ गई, फर्दर यू कैन डू इट एज इट इज। So these were some these were some questions which we have to reduce them first to the linear equation. We move to the second question, question number 2, part 1. This is a question of downstream upstream. This is one of the basic question that appear in the board exam. So let's understand this. Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours। डाउनस्ट्रीम का और अपस्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डाउनस्ट्रीम का मीनिंग है कि जब भी आप रो कर रहे हो या स्विम कर रहे हो, तो एक पानी की स्पीड है और एक मैन की स्पीड है। सपोज ये पर्सन है पी, एक इसकी स्पीड है। डाउनस्ट्रीम का मीनिंग है कि आप भी इसी डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो या रो कर रहे हो और वाटर की भी यही डायरेक्शन है, बोथ यू आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो डेफिनेटली you will get some push from the water waves, so your speed will definitely increase। अगर रनिंग वाटर है और आप खुद से स्विम भी नहीं कर रहे हो, तब भी आप उसके साथ साथ फ्लोट करोगे विद द स्पीड ऑफ वाटर। तो अगर पानी की स्पीड x है और आपकी स्पीड y है, तो डाउन स्ट्रीम में आपकी टोटल स्पीड क्या हो जाती है? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अपस्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है? अपस्ट्रीम का मीनिंग है कि अगर पानी की डायरेक्शन ये है, लेकिन जो पर्सन है वो इस डायरेक्शन में फ्लोट कर रहा है, दिस इज वाई, सॉरी दिस इज पी, this is person and this is the speed of the water waves, again this is x, this is y। अब यहाँ से ये चीज़ समझो कि अगर पानी की स्पीड ज़्यादा हुई, अगर x ज़्यादा हुआ तो आप मूव नहीं कर पाओगे, अगर आपकी स्पीड से ज़्यादा हुआ तो डेफिनेटली आप पानी के साथ स्विम करना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो y हमारा x से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम अपोजिट डायरेक्शन में अपस्ट्रीम में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी नेट स्पीड होती है, अगर हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर रहे हैं और पानी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि इफेक्टिव स्पीड जो हमारी है, नेट स्पीड है, वो 10 ही है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में पुश लग रहा है। सो दिस इज y माइनस x किलोमीटर पर आवर। Now moving to the questions. Ritu swim या row, Ritu can row downstream with the speed
x plus y kilometer per hour. So what is distance? Distance is 20 kilometer. Time is 2 hour. So speed is distance upon time. Put the values. Speed is x plus y. Distance is 20 by 2. This is 10. So x plus y is equal to 10. This is equation number 1. Upstream, Ritu row upstream with a speed of y minus x kilometer per hour. So again speed is equal, again we have given distance is equal to 4 kilometer and time is equal to 2 hour. Speed is equal to distance upon time. Here y minus x is equal to 4 by 2. So this is y minus x is equal to 2, or writing in sequence we will get minus x plus y is equal to 2. So this is equation number 2. So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, you can see 1 and 2 on the screen. X plus y is equal to 10, x minus x plus y is equal to 2. X plus y is equal to 10 minus x plus y is equal to 2. So we need not to do any method. They are cancelling each other directly. So they cancel each other. Here we are getting 2y is equal to 12. Y is equal to 6 kilometer per hour. So y is the speed of the person. Here रितु की स्पीड कितनी आई हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. So now we have to find x, that means speed of water. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. Current means water waves की speed कितनी है. So put y is equal to 6 in any equation. Say in equation 1 में put किया हमने. X plus 6 is equal to 10. So x is equal to 10 minus 6. X is equal to 4 किलोमीटर पर आवर. तो ऋतु की स्पीड हमारे पास आई. ऋतु स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर. और करंट की स्पीड क्या है? करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर. You can check your answer or you can indicate your answer from here also. जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए करंट की स्पीड से, तभी अपस्ट्रीम पॉसिबल होता है. तो 6 इज ग्रेटर देन 4. सो दिस इज अ चांस ऑफ द करेक्ट आंसर. सो secondly, you can check your answer by putting these two values in the equation so that you can check your mathematical part is okay. That's it for today, and from the next video we will be covering chapter number 4. We will start chapter number 4. If you have any doubt in any question of chapter number 3, please write down in the comment section so that we can make a separate video on all the problems